गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी टाइम हो रहा है 6:48 PM शाम के। 31 मार्च है और वही करने वाला हूँ जो हर रोज़ करता हूँ, दैट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अभी एक छोटा सा बात मैं कह दूँ कि मेरा जो है ना, ये प्रीवियस वीडियोस मैंने थोड़ा सा डिलीट कर दिए क्योंकि मैं चाहता था कि वीडियोस को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाएं, थोड़ा सा सीरियस तरीके से, क्योंकि पहले मैं जो है लाइव स्ट्रीम करता तो था बट उतना अच्छे से नहीं करता था, कभी बीच में उठ जाता था या फिर मैं ऐसे ही लाइक। तो यही इस बार मैंने सोचा है कि I try to improve the quality of the video, like not the pixel quality, like whatever things I'm doing in between, and it would be solely based on programming. ठीक है, तो शुरू करते हैं। बूटस्ट्रैप कर रहा था मैं, बूटस्ट्रैप पे थोड़ा सा दिमाग चला रहा था। डॉक्यूमेंटेशंस कुछ खास समझ नहीं आ रहा था बट चलिए धीरे धीरे समझ आने लगेंगे। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है और अ, हाँ, तो मैं ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था, लाइक हाउ द ग्रेड सिस्टम इन लाइक बूटस्ट्रैप वर्क्स। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से कुछ खास समझ नहीं आ रहा था तो मैं सोचा यूट्यूब में अब मैं देखूंगा, लाइक द ग्रेड सिस्टम इन, मतलब ग्रेड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। तो एक अच्छा सा वीडियो ये लग रहा है मुझे, न्यू ग्रेड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। पता है क्या, मुझे थोड़े से वेस्टर्न वीडियोस की, लाइक आई हैव अ काइंड ऑफ फैसिनेशन टुवर्ड्स दिस डेवलपर्स हु आर वेस्टर्न, लाइक इंडियन डेवलपर्स। आई डोंट नो व्हाई, बस कुछ मजा नहीं आता है देख के, एंड आई डोंट ट्रस्ट देम, आई डोंट नो व्हाई। लाइक एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं।
अभी तक छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं, लाइक जो है, मतलब यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का फंडामेंटल यूज यही है कि you are allowed to make responsive layouts by using the grid system. Other than that, there are already like predefined classes to make, different navigation bars, different kind of things. But one of the most fundamental concept in web development is making responsive layouts for different devices. So for that, grid system comes into play where you can add different breakpoints, and based on that, the viewport would adjust itself. So it's a pretty good thing according to me. Yes, अच्छा लगा मुझे ये देख के. All right. तो अभी तक मुझे इतना ये ठीक-ठाक तरीके से समझ आ गया है, बट अब मुझे सबसे पहले बूटस्ट्रैप के कुछ फीचर्स समझने हैं, उसके बाद आई एम गोना बी डूइंग this thing, like grid system. Once I'm able to build layouts, after that I'm gonna be, तो पहले ये समझ लेते Hey हैं. everyone, welcome back to another video of AccurJobs course on frontend. And in this particular video, you will be understanding how we can use all these commonly used CSS properties using Bootstrap. Right? So we'll be picking all these properties one by one, very easy way. Okay, it's a very chill video, trust me. We'll be picking up all these particular CSS properties one by one, and we'll be understanding how the classes are built in Bootstrap to pick each one of these. Right? So the first one we need to use is background color. See, in order to learn background color, the first thing I want to remember is that this bootstrap has few bootstrap colors that are pre-built. That means if I have Ayush pencil here, and if I want to give a background color here. So here, I hope you remember that we give classes in bootstrap. That is obvious, right? Let me zoom it a little bit now. So this is the h1 tag that I've just added, and I just need to add some particular classes to provide it a background. Let's refer to the documentation, right? Because every particular CSS property that is to be integrated, that is to be used, should be first learned using the Bootstrap documentation. So now let's go to the documentation. So this is the documentation, and I'll just write BG background color, right? So here you can see the background color. Now this is important. Let's just check that background color has to be added by a class called bg-primary. Where bg stands for background, and then primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, body are actually the colors. In Bootstrap, there are certain set colors that you can use. Any other color that you want apart from that can be added using CSS, right? So if you want to add this particular background, you just simply need to copy this particular CSS class and need to paste it here. Let me show you the output of it. Now, here you can see that once I gave the class of bg-primary, it provided me a light blue color, like sky blue color in the background. This is the same BG color that you can see here. Similarly, I have this, I have this, I have this, and all these colors are present. So let me copy all these elements and I'll paste it in my div.
to check how they look like. Okay, so first of all, just forget about these things. Okay, this is something that we'll be discussing. Just to tell you, this is giving the padding, this is giving the margin bottom, as the short form would give you a hint of. Okay, and this is giving some text color. Okay, forget about that as well. Okay, our concern is BG classes. Okay, so let me highlight all the BG class. So you can see these are the BG classes that you have: primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, body, white, transparent. These are the main classes for colors. Remember, these are the main colors of Bootstrap. Not only they'll be useful when we create a background, but when we color a particular element, when we provide borders, much like that, and any other place where colors are concerned. Okay, so there, primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, body, white, transparent, all these things would be coming in handy. Okay, so I want you to remember that these are the colors of Bootstrap. Let me show you the output of it now. So here is the output, and you can see this is BG primary, BG secondary is gray, BG success is the color of success, which is green, danger, red, warning, yellow, BG info is blue, this is light. Well, light does not equal to white. You can see that this is white and this is light. So it is a very, very light grayish tone. Then this is dark, which is practically black, right? Then this is body. It takes the color of the body, right? And hence, that since the color of the body was white, it is white. This is BG actually white, okay? And so this is the white color. And since the body is also white, you are unable to distinguish it, okay? And this is BG transparent, means whatever the background is of the parent, that would be taken up by this particular text, right? So that is how things are working. Yeah. So I hope it's now clear how we can use background, right? And so easy, right? Just by providing BG dash, BG dash, BG dash, all this stuff, and we are done with providing a background color, marking it as done. Okay. Then next comes. यार पता है बूटस्ट्रैप अभी के लिए तो आह, क्या कहूँ, थोड़ा-सा आसान ही लग रहा है मुझे, मतलब कुछ ख़ास इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। बट एनीवेज़ एक बार हमें ये बैकग्राउंड कलर वाला डॉक्यूमेंटेशन ज़रा-सा देख लेता हूँ। 1 मिनट, एक कॉल आया है, ठीक है? हेलो? हुँ। अच्छा, अच्छा। हो केला का बुवा? ना. नाही, नाही, नाही. जान्य तो देहनगू. जान्नी रायते ನೋಡಬಹುದಾ? ओह! होगा फिर. और जानना भी तो. ঠিক আছে, তুমি কি করবা ভাই? হইছে না কামটা? হুম, ভালোই। ঠিক আছে, হবো। কি করো? জুয়েল? হবনি, রাহি। গেতাছি আমি। পয়সা তো দেওই নাই, কোন থেকে আনো? হবো, রাহি। तो यार पता है क्या, मेरी मम्मी गई है अपनी मायका, मतलब मेरे मामा के घर। तो मुझे कह रही है कि दूध ला के रखना, क्योंकि सुबह शहरी के टाइम पे पापा को चाहिए होगा। खैर, हम थे बैकग्राउंड कलर पे। तो similar to the contextual text color classes, set the background color of any element to any contextual class background utilities. Do not set color. So in some cases you will want to use dot text dash star color utilities. तो ये है डिफरेंट बैकग्राउंड क्लासेस, ठीक है? तो हम देते हैं इसको कलर,
ठीक है, एक बार कलर दे के देखते हैं कैसा लगेगा। ये हमारा नैव एलिमेंट है। नैव एलिमेंट के बाद मैं देता हूँ एक H1 और उसमें लिखता हूँ इफ्तिकार जहान, ठीक है। और इसमें मैं दूंगा क्लास बीजी इन्फो। इन्फो what it will do is it should give it a color. have a look, ये लो कलर दे दिया इसने बैकग्राउंड। तो हम ऐसे ही डिफरेंट कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं अगर चाहे तो। बस यही है, क्या मतलब कुछ खास नहीं है मतलब, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, दिस इज नथिंग स्पेशल। डिफरेंट कलर क्लासेस दो और डिफरेंट कलर्स ऐड कर दो। बैकग्राउंड ग्रेडियंट, अच्छा। By adding .bg gradient class, a linear gradient is added as a background image in the backgrounds. This gradient starts with a semi-transparent white which fades out at the bottom. अच्छा, इन कलर्स में, ये ब्लू कलर्स में ग्रेडियंट दिख नहीं रहा है वैसे, बट इन कलर्स में दिख रहा है डार्क ये सब में डॉट बीजी ग्रेडियंट है ना। उसके बाद ओपेसिटी। बैकग्राउंड कलर utilities are generated using SAS with SAS using CSS variables. This allows for real-time color changes without compilation and dynamic alpha transparency changes. मतलब अगर तुम्हें ओपेसिटी देना होगा तो तुम्हें अलग से ऐड करना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखो स्टाइल देके इसने एक इनलाइन स्टाइलिंग दिया है, बी एस बी जी, क्या है ये। टू चेंज द ओपेसिटी ओवरराइड वाया कस्टम स्टाइल्स और इनलाइन स्टाइल्स, ठीक है। ओके, ठीक है। तो बी एस बी जी ओपेसिटी, हम अगर इसको कॉपी करते हैं ना, ये कस्टम स्टाइल में दे रहा हूँ। सो ओपेसिटी देने के लिए तो लेट्स गिव द ओपेसिटी 0.5 नहीं, मैं दूंगा ओपेसिटी, बहुत कम ओपेसिटी होनी चाहिए सो दैट थोड़ा सा समझ आए कि काम कर रहा है। हाँ ये देखो काम कर रहा है ना, बिल्कुल लाइट्स ब्लू सा हो रहा है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। 3 कर देता हूँ, 0.3। then you will be able to see this opacity, and this could be increased according to the needs, right? Or choosing any dot bg dash opacity utilities। अच्छा यूटिलिटी क्लास है तो फिर ये करने का क्या पॉइंट था। अच्छा ऐसे हम दे सकते हैं ना ओपेसिटी 75 ऐसे। In addition to the following SAS functionality, consider reading about our included. Most background color utilities are generated by our theme colors, which I reassigned from our generic color palette variables. Variables for setting background color, SAS maps। इसको अगर मैं स्टडी करने लग जाऊँ ना तो बहुत टाइम लगेगा। अभी के लिए जल्द से जल्द प्रॉपर्टीज को समझ के मुझे जो है प्रोडक्ट को बनाना है, दैट्स द टारगेट, राइट। सो बैकग्राउंड कलर हो चुका है, अभी अगले प्रॉपर्टी Text में color. बढ़ते हैं। Okay, first of all, let me remove all this. This is all the stuff, and we are done with providing a background color. Marking it as done. Okay. Then next comes text color. Okay. First of all, let me remove all this. This is useless. Also, let's remove all this because this is the property that we actually have to learn or understand. Cool. So again, let's understand what is the situation currently. In the current situation, you can see that all these div elements have different background colors. Let's see again how it looks like, and it looks like this. Now,
I want you to understand the text color, right? And the text color is very similar to the BG color simply because instead of BG, I just need to replace it with text, right? And here, if I just change it to text, okay, let me remove this because this does not make sense. Yeah. So apart from this, now all this are what? They are classes of text, meaning text primary would give me a color of primary which was blue. Text secondary would give me a text color of the gray stone that it had. लो भाई, चार्ज कम हो रहा है मेरा। लैपटॉप में चार्जर लगाना पड़ेगा। ओह सॉरी यार। Would give me a text color of the gray stone that it had. Success would give me green, danger red, warning yellow, info like that aqua blue color, right? Light would be a very light gray, right? Dark would obviously be black, and white would be white. Also, let's give this a background color of dark so that we can actually see this. Something interesting. Blue, gray, green, red, yellow, info. And here you can see the light, very light grayish tone is present here. Let me zoom in more. And if you do not see it right now, let me provide it a BG again. So let's provide this also a BG. BG primary for now. And here you can see the color. Okay, so it's very light gray, very light gray. Okay, then this is black and then this is white. So I hope you understand how things are working around the text property. So since these were the first two properties, this has taken a little more time. Now I'll be rushing up to more properties, which would be a little faster. We'll be covering things faster, okay? Or else the video would be very long. Okay, let's move ahead. Now, margin and padding would be a proper discussion, so that would be coming up later on. Let's discuss the font size. Okay, if I'm not there, if you are learning it on your own, how will you search? You'll just search for font size. Okay, and you reach somewhere here. What does that mean? I was just trying to explain that the bootstrap documentation is very well written. Okay, and you can simply find whatever property that you want to use in the bootstrap documentation very easily. And here you can see FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6. These are the properties in which we can give different sizes. And if you try to understand or relate, don't you think these were the sizes of the H1, H2, H3, H4, H5, H6? Well, these are actually based on data in which we understand what are the most commonly used sizes. These are the most commonly used sizes. And since these are the most commonly used sizes on the website, these are the sizes that Bootstrap has presented us. Okay, I want you to understand something really good. I'm copying it. Just check. So I'm copying this and pasting it here. So these are the classes. And now I want you to focus on this particular thing. Okay, because something interesting is coming up. Just check how the size of this particular text is decreasing. Can you see with change in size of the page, the size of the text automatically starts to decrease? Why? Because I told you that it is responsive. I told you that Bootstrap is responsive. Hence, it made the text shorter as the page size got shorter. Okay. So I hope that is also clear. FS-1 font size, FS easy to remember. Hence, it was FS1, FS2, FS3. So this marks done. I'm also marking done on the font size. So let's discuss text line, text decoration, all these such properties. So here are all the text properties. Okay, and we'll not be just copying pasting it into VS Code now because it will again start to take time, and we should be using our time properly, right? So let's discuss. Okay, let's first discuss the text line property. If you just check what was text line, so text line property was nothing. It was just a property to align the text in the horizontal manner, right? So if you just check, this is text start, text center, and text end. Now I want you to understand that in Bootstrap, left is comprehended with start. In future, if you are even wanting to write margin left, you will not write margin left, you will write margin start. Just like that, if you want to align text align to left, it will not be left, rather it would be start. Okay. Then center remains center. Okay, no change there, but right has changed to end. I hope you understand that. Okay. So that is our discussion on center, start, and end. Okay, using text align start, text line center, text line end, you can get an output like this. So this is text start, this is text center,
And this is text right. Okay. Then next would be text transform. So if you check, this is text dash lowercase gives us a lowercase, text uppercase takes uppercase, capitalize takes capitalize. What was capitalized? If I have this as a text, okay, and if I want to capitalize it, what will it do? It will make sure that the first letter of each word is capitalized. Okay, that is what it will do. Okay, this is यार पता है क्या, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि तुम अपने उन प्रॉपर्टीज को देख लो अच्छे से, जैसे कि ये है कलर्स में, तुम यहाँ पे दे सकते हो कलराइज टेक्स्ट विथ कलर यूटिलिटीज. इफ यू वांट टू कलराइज लिंक्स, you can use the link dash star helper classes which have the hover and focus states. Color utilities like dot text that generated from our original theme colors. तो यहाँ पे हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं, जैसे मान लो ये है ब्लू कलर में, ठीक है, ब्लू कलर में मैं चाहता हूँ कि एक येलो का ये आ जाए, ठीक है, तो मैं दूंगा डॉट टेक्स्ट वार्निंग. इसमें ओपेसिटी दे दी मैंने, यहाँ पे टेक्स्ट वार्निंग. टेक्स्ट वार्निंग दूंगा तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि जो है टेक्स्ट का कलर येलो हो गया. तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट कलर्स आप ऐड कर सकते हो. यहाँ पे क्या लिख रहा है, डेप्रिकेशन विद द एडिशन ऑफ टेक्स्ट ओपेसिटी यूटिलिटीज एंड सीएसएस वेरिएबल्स फॉर टेक्स्ट यूटिलिटीज डेप्रिकेटेड. ठीक है, तो हम जो है ओपेसिटी भी दे सकते हैं, स्पेसिफिसिटी, सैस वेरिएबल्स. चलो ठीक है, बकवास है, हो गया. टेक्स्ट दे दिया हमने, अब क्या देना है, यहाँ पे मेरे को लिखना है क्या था, मार्जिन पैडिंग तो नहीं था, ये कुछ था, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइनमेंट. ये रहा टेक्स्ट अलाइनमेंट. easily realign text to components with text alignment class for start, end, and center alignment. Responsive classes are available that use the same viewport. Start aligned text on all viewport sizes, center aligned, end aligned. तो आप डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स भी दे सकते हो, ठीक है, जैसे टेक्स्ट स्टार्ट, तुम चाहो तो इसमें एक क्लास लगा दो, क्या, टेक्स्ट एंड, या फिर सेंटर दे दो, है ना, टेक्स्ट सेंटर. तो जो है हमारा टेक्स्ट ये सेंटर में आ गया. उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग एंड ओवरफ्लो. रैप द टेक्स्ट विद अ टेक्स्ट रैप क्लास. ये बैज क्या है, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी टेक्स्ट रैप. अच्छा, रैप मतलब द टेक्स्ट, prevent text from wrapping with a dot text no wrap class. ठीक है, वर्ड ब्रेक, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अब टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो टेक्स्ट अपर केस करके. पता है क्या, मार्केट से मुझे दूध भी लाना है अभी, पर इंटरेस्ट आ गया तो
ये घर के काम भी ना यार, बड़े। एक साइज दे देते हैं हम, FS2 देंगे, है ना? FS2, आई थिंक बेसिकली इट्स अ H2 हेडिंग, लाइक FS2। लेट्स सी, FS2 दिया मैंने, तो क्या होगा ये देखो। अब इसको अगर हम साइज को अगर रिसाइज करते हैं ना, तो उस हिसाब से हमारा जो टेक्स्ट का साइज होगा वो छोटा होता जाएगा। ये देखो, जैसे जैसे मैंने स्क्रीन को छोटा किया, टेक्स्ट का साइज छोटा हो रहा है या नहीं? रुकिए देखते हैं। कहाँ है बॉडी? बॉडी में ये हमारा H1 है। H1 के अंदर आ, ये देखो, देखा? यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, 1.325 रैम प्लस 0.9 व्यू पोर्ट विथ। ठीक है, इससे क्या होता है पता है क्या? जैसे ही व्यू पोर्ट के साइज के हिसाब से जो है टेक्स्ट का साइज भी वेरी होता है। देखो ये छोटा हो गया, अभी तुम बड़ा करोगे तो ये टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। ये आपको डिफरेंस और पता लगेगा अगर तुम है ना ये इसको FS2 के जगह FS1 कर दोगे, है ना? अब तुम्हें और अच्छे से डिफरेंस पता लगेगा। लेट मी शो यू, सी नाउ इट्स FS1 राइट। स्टिल फॉर द सेक ऑफ कन्वीन, लाइक तसल्ली के लिए रिफ्रेश कर लेता। अब देखना, ये साइज जो है छोटा हो जाएगा अपना टेक्स्ट का। ये देखो, जैसे जैसे स्क्रीन छोटा हो रहा है, हमारा टेक्स्ट का जो साइज है वो भी छोटा होता है। And it depends on the viewport width, and it's a very responsive design principle. That's why bootstrap is useful. Like आप अगर bootstrap यूज करके कर रहे हो, then you don't have to think about those responsive design principles that have been individually made. वो बहुत messy हो जाता है, but bootstrap अपने आप, like it handles it on its own, so it's an amazing thing, right? So then you can add different font weights. अच्छा, तो जैसे कि आप इसको बोल्ड बना सकते हो, सेमी बोल्ड बना सकते हो। तो बोल्ड टेक्स्ट FW बोल्ड से आता है, ठीक है। लाइन हाइट दे सकते हो। हाँ, मोनो स्पेस दे सकते हो। तो ये सब है, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। कॉपी करो और फिर इसमें एक और वो दे दो, क्या? ये जो है ना, FW बोल्ड, और फिर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन किए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्लास दो FW बोल्ड, और जो क्लास हमने कॉपी करी थी वो, तो इससे अंडरलाइन भी हो जाएगा और बोल्ड भी हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अच्छी चीज़ है ये तो। अरे, FS3, FS4, FS5, FS6. These are the properties in which we can give different size. पता है क्या, अभी शाम के हो रहे हैं 7:30, मुझे दूध लाने जाना पड़ेगा, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगा 8 बजे के बाद, है ना? तो लाइव स्ट्रीम को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, आधे घंटा, 20 मिनट में मैं आ जाऊँगा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन।